Shri Guru Charana Padma Kevala Bhakati Sarma Shri Guru Charana Padma Bhakati Sarma
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama. That is you are saying that your voice is very nice to me. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare
पास में बजाओ, पास 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 बजाओ, पास पास Savior of the whole world, teacher. Namo Krishna Padaya, Krishna Pustaya Pujane, Srimati Bhakti Vedanta Swami, Itinamuni, Namaste Saraswati Devi, Gauravan Vichari, Namaste Sasoni Vali Pasakachanas.
Right. Table. Sloka, any specific sloka? Kunti Bharani or? Do we need to have Bhagavatam? Do you want Bhagavatam? Yeah. Yes. Yes. English. Sorry? Yeah. Mataji, Mataji just this. That's not Yes, you can. Yes, चल पर आपको नहीं है मेरे पास अब इतना समय नहीं है अभी क्लास के
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So we read from the Srimad Bhagavatam, the prayers of Queen Kunti, by His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. We're reading text number 19 of Canto 1, Chapter 8, with purports and translations by Srila Prabhupada. And Queen Kunti, she's speaking. Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor covered by the curtain of deluding energy. सीमित इंद्रिय ज्ञान से परे होने के कारण आप ठग नहीं सकती, माया के पर्दे से ढके रहने वाले शाश्वत अव्यय तत्व हैं। You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. आप मूर्ख दर्शक के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता के वस्त्र पहना हुआ कलाकार पहचान में नहीं आता। In the Bhagavad Gita, Lord Shri Krishna affirms that less intelligent persons mistake him to be an ordinary man like us, and thus they deride him. भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण इसकी पुष्टि करते हैं कि अल्पज्ञानी व्यक्ति उन्हें अपने समान ही सामान्य व्यक्ति समझने की भूल करते हैं और इस प्रकार वे लोग उनका उपहास करते हैं। The same is confirmed herein by Queen Kunti. यहाँ पर इसी बात की महारानी कुंती द्वारा पुष्टि की गई है। The less intelligent persons are those who rebel against the authority of the Lord. अल्पज्ञानी व्यक्ति वे हैं जो भगवान की सत्ता के प्रति विद्रोह करते हैं। Such persons are known as the Suras. ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। The Asuras cannot recognize the Lord's authority. असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। Yes. It's still quite cool here. Yeah. And coming here, I need a hat. Yeah. So, such persons are known as Asuras. The Asuras cannot recognize the Lord's authority. When the Lord himself appears amongst us as Rama, Nrsimha, Varaha, or in his original form as Krishna. ऐसे व्यक्ति असुर कहलाते हैं। असुर भगवान की सत्ता को नहीं पहचान सकते। भगवान जब राम, नरसिंह, वराह या अपने मूल रूप कृष्ण रूप में हम लोगों का मन प्रकट होते हैं। I just want you to notice. Prabhupada writes Rama, and he writes Krishna. He doesn't write Ramo, and he doesn't write Krishna, right? तो माता जी बोल रहे हैं कि आप लोग को ध्यान देना चाहिए कि प्रभुपाद जी ने रामो नहीं कहा है, ओ नहीं कहा है, रामो कहा है, राम, कृष्ण कहा है। तो हम कृष्णो रामो ऐसा नहीं कहना चाहिए। ध्यान देना चाहिए आप सबको। He performs many wonderful acts which are humanly impossible. तो वे ऐसे अनेक आश्चर्य कार्य करते हैं जो मनुष्य के लिए असंभव है। As we shall find in the 10th canto of this great literature, Lord Shri Krishna inhibited his humanly impossible activities even from the days of his lying on the lap of his mother. जैसा कि हम इस महान ग्रंथ के 10वें स्कंद में देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण ने तभी से मानव मात्र के लिए असंभव कार्यकलाप करने प्रारंभ कर दिए थे जब वे अपनी माता की गोद में थे। He killed the Patana witch, although she smeared her breast with poison just to kill the Lord. उन्होंने
उस पूतना राक्षसी का वध किया जो अपने स्तनों में विष पोत कर उन्हें मारने आई थी। The Lord sucked her breast like a natural baby, and he sucked out her very life. भगवान ने सामान्य बालक की भांति उसका स्तन पान किया, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ उसके प्राण भी सोख लिए। He lifted the Govardhan hill, just as a boy picks up a frog's umbrella, and stood several days continuously just to give protection to the residents of Vrindavan. इसी प्रकार उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उसी तरह उठा लिया जिस प्रकार कोई बच्चा कुकुरमुत्ता उठा लेता है। These are the superhuman activities of the Lord, described in the authoritative Vedic scriptures like the Puranas, Itihasyas, histories, and Upanishads. वे वृंदावन वासियों की रक्षा करने के लिए पर्वत की कई दिनों तक उठाए रखे। ये भगवान के कतिपय अति मानवीय कार्यकलाप हैं जिसका वर्णन पुराणों, इतिहासों तथा उपदेशों में हुआ है। He has delivered wonderful instructions in the shape of the Bhagavad Gita. उन्होंने भगवत गीता के रूप में अद्भुत उपदेश दिया है। He's shown marvelous capabilities as a hero, as a householder, as a teacher, and as a renouncer. उन्होंने एक वीर, एक गृहस्थ, एक शिक्षक तथा एक त्यागी के रूप में अद्भुत पराक्रम कर दिखलाया। He's accepted as the supreme personality of Godhead by such authoritative personalities as Vyasa, Vivala, Sita, Narada, Madhava, Sankara, Ramanuja, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Shiva Goswami, Vishwanatha Chakravarti, Bhaktisiddhanta Saraswati, and all the other authorities of the line. व्यास, देवल, असित, नारद, मध्व, शंकर, रामानुज, श्री चैतन्य महाप्रभु, जीव गोस्वामी, विश्वनाथ चक्रवर्ती, भक्ति सिद्धांत सरस्वती तथा उस परंपरा के अन्य प्रमाणिक महापुरुषों ने उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया है। He himself has declared as much in many places of the authentic literatures. उन्होंने स्वयं भी प्रमाणिक साहित्य में अनेक स्थलों पर ऐसा ही घोषित किया है। And yet there is a class of men with demonic mentality who are always reluctant to accept the Lord as the supreme absolute truth. फिर भी आसुरी मनोवृत्ति वाले लोगों का एक ऐसा वर्ग है जो भगवान को परम सत्य के रूप में मानने में आनाकानी करता है। This is partially due to their poor fund of knowledge and partially due to their stubborn obstinacy, which results from various misdeeds in the past and the present. यह कुछ तो उनके अल्प ज्ञान के कारण है और कुछ उनके विगत तथा वर्तमान दुष्कर्मों के परिणाम स्वरूप उनकी घोर मूढ़ता के कारण है। Such persons could not recognize Lord Sri Krishna even when he was present before them. भगवान कृष्ण जब लोगों की आंखों के सामने साक्षात उपस्थित थे तब भी वे उन्हें पहचान नहीं पाए थे। Another difficulty is that those who depend more on their imperfect senses cannot realize him as the Supreme Lord. दूसरी कठिनाई यह है कि जो लोग अपनी अपूर्ण इंद्रियों पर निर्भर रहते हैं कि परमेश्वर के रूप में उनकी अनुभूति नहीं कर पाते। Such persons are like the modern scientists. They want to know everything by their experimental knowledge, but it is not possible to know the Supreme Person by imperfect experimental knowledge. ऐसे व्यक्ति आधुनिक वैज्ञानिकों के समान हैं। वे सारी वस्तुओं को अपने प्रयोगात्मक ज्ञान से जानना चाहते हैं, लेकिन परम पुरुष को अपूर्ण प्रयोगात्मक ज्ञान के द्वारा जान पाना असंभव है। He is described herein as a Dokshija, or beyond the range of experimental knowledge. All our senses are imperfect. We claim to absorb everything and anything, but we must admit that we can observe things under certain material conditions only, which are beyond our control. यहाँ पर उन्हें अधोक्षज कहा गया है, अर्थात वे प्रयोगात्मक ज्ञान की परिधि के परे हैं। हमारी सारी इंद्रियां अपूर्ण हैं,
हम दावा करते हैं कि हम सारी वस्तुएं देख सकते हैं, लेकिन हमें कबूल करना होगा कि हम केवल कुछ भौतिक परिस्थितियों में ही वस्तुओं को देख सकते हैं, और वे भी हमारे बस में नहीं होती। The Lord is beyond the observation of sense perception. Queen Kunti accepts this deficiency of the conditioned soul, especially of the woman class who are less intelligent. भगवान इंद्रिय गम्य नहीं है। महारानी कुंती बद्धजीव की और विशेष रूप से अल्पज्ञ स्त्री जाति की इस न्यूनता को स्वीकार करती हैं। And Prabhupada said, not our devotee ladies. प्रभुपाद ने कहा था कि ये भक्त माताओं के लिए नहीं है। For less intelligent men, there must be such things as temples, mosques, or churches, so that they may begin to recognize the authority of the Lord and hear about him from authorities in such holy places. अल्प लोगों के लिए मंदिर, मस्जिद या गिरजाघर जैसी वस्तुओं की आवश्यकता होती है, जिससे वे भगवान की सत्ता को पहचाने तथा ऐसे पवित्र स्थलों में भगवान के विषय में प्रमाणिक व्यक्तियों से श्रवण कर सकें। For less intelligent men, this beginning of spiritual life is essential, and only foolish men decry the establishment of such places of worship. अल्पज्ञों के लिए आध्यात्मिक जीवन का ऐसा शुभारंभ आवश्यक है, और मूर्ख लोग ही इन पूजा स्थलों की स्थापना का विरोध करते हैं, जिनकी आवश्यकता जनता में आध्यात्मिक गुणों के मानदंड को ऊपर उठाने के लिए पड़ती है। For less intelligent persons, bowing down before the authority of the Lord, as generally done in the temples, mosques, or churches, is as beneficial as it is for advanced devotees to meditate upon him by active service. अल्पज्ञों के लिए मंदिरों, मस्जिदों या गिरजाघरों में जाकर भगवान की सत्ता के समक्ष नतमस्तक होना उतना ही लाभप्रद है जितना उन्नत भक्तों के लिए क्रियात्मक भक्ति सेवा द्वारा भगवान का ध्यान करना। So Queen Kunti, when Prabhupada says, they say that less intelligent and like the woman class, but you see Queen Kunti, she is a lady and so intelligent, isn't it? Yeah, so intelligent. And then Prabhupada, he says, after that, he was saying the less intelligent men. So, but when he says less intelligent men, he's not saying a particular gender. It's men, meaning all human beings. Yes. So it doesn't matter if you're a lady or a man. You can be certainly less intelligent if you cannot accept the Supreme Personality of Godhead. And it doesn't matter. Like you see, Krishna has many, many forms. He has Rama, Nisringa, Varaha, so many. We can name Kurma, and who else? We can name some more names of Krishna. Matsya, Varaha, Vaman, Raman, Vaman. Oh, Vamanadev, that little beautiful boy that became so big. And then Bali Maharaj, he asked Bali Maharaj for 3 pieces of steps, 3 steps, when he takes 3 steps. And the first step covered the whole universe.
And then the next covers the whole spiritual creation. One step was left. And where did he put it? Where did he put his foot? And you know, I need to translate. all right, what did they say? I'm thinking he's answering all the questions. हरे कृष्णा। तो माता जी बता रही हैं कि कभी कभी शास्त्रों में लिखा रहता है कि वुमेन जो स्त्रियां हैं वो कम बुद्धिमान है। प्रभुपाद जी हमेशा कहा करते थे कि ये भक्तों के लिए नहीं है, ये भक्त स्त्रियों के लिए नहीं है, ये साधारण जनता के लिए है। जो भी भगवान का भजन नहीं कर रहा है वो एक प्रकार से लेस इंटेलिजेंट है, वो कम बुद्धि वाला है। क्योंकि और फिर बता रही थी कैसे भगवान यहाँ पे अलग अलग भगवान के रूपों का नाम दिया हुआ है, राम, कृष्ण, नरसिंह, वामन। और लास्ट में वामन देव के बारे में बता रहे थे कि वामन देव जो है कैसे बलि महाराज से सब कुछ ले लेते हैं। और आप लोग बताइए कि तीसरा पैर उन्होंने कहाँ रखा था, बताइए। on head. On the head, yes. And squashed squashed Bali Maharaj down to the netherworld. Yes. जब उन्होंने सिर रखा तो बलि महाराज बिल्कुल पाताल में चले गए। And she's saying here also about Putana the witch. Who knows Putana the witch? यहाँ पर प्रभुपाद जी पूतना के बारे में भी जाने तो कि बहुत बड़ी राक्षसी थी। कौन जानते हैं आप में से पूतना के बारे में? Ladies. Ladies. You know, she Putana the witches. You have to you can stand up and speak loud. Okay? All आप खड़े हो जाइए और बोलिए। जो stand up. Just speak loud. पूतना एक राक्षसी थी जो गोपी का वेश धारण कर भगवान को मारने के लिए गोकुल में आई थी। Putna was a demoness and she appeared a very beautiful attire of a gopi and she killed with the intention to kill Krishna. And how did she do that? She put poison on her breast and then she feeded the Lord. Yeah. She actually she made herself very beautiful. And then she just walked into Vrindavan. And she walked into Vrindavan, and the people were just mesmerized by her. And they just let her walk straight into where Krishna was. माता जी बता रही हैं कि पूतना जो थी वो कैसे मारी थी, तो उसने अपना वेशभूषा बहुत बदल लिया था, बहुत सुंदर दिख रही थी और बहुत दिव्य दिख रही थी, इतना कि वो सीधे सीधे कृष्ण के चैम्बर जो उनका स्लीपिंग रूम होगा वहां पे वो चली गई। They didn't even question, who is this woman? They thought she's some demigoddess. वहां पर उपस्थित जो लोग थे जो कृष्ण की सेवा कर रहे थे उन्होंने किसी ने पूछा तक नहीं, क्यों? क्योंकि वो लग रही थी कोई देवलोक से आई हुई कोई स्त्री है। But she was tricking them all. बट वो सबको घुमा रही थी। And do you know who sent her? आपको पता है किसने भेजा था उनको? Yes, he did. Because he wanted to kill that little Krishna. Because he found out that this boy called Krishna is going to be the one that's going to kill him. Yeah. आपको पता है कि उसको कंस ने भेजा था और कंस जो थे वो क्या करना चाहते थे? कृष्ण को मारना चाहते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि ये कंस, कृष्ण जो है कंस को मारने वाले हैं। And Krishna, he was in the crib, in the bassinet, and he was kicking his legs around, laughing. And she picked him up, and he was laughing. कृष्णा पल्ले में थे और वो अपना हाथ पैर ऊपर नीचे फेंक रहे थे और ऐसा देखते हुए जो पूतना आई थी उन्होंने उनको गोद में उठा लिया। कृष्णा बहुत हैप्पी मूड में थे, खुश थे। Because he knew she was. क्योंकि भगवान जानते थे कि वो कौन है। So he let her pick him up and take him outside and sit down
तो भगवान ने उन्हें उठाने दिया उनको, और उनको लेकर के पूतना जो थी, कृष्ण को लेकर के पूतना बाहर गई और बैठ गई। And with her poisoned breast, she gave Krishna milk. उनके स्तन पे विष का विष लगा हुआ था, उस स्तन को उन्होंने कृष्णा को दिया। And Krishna is laughing and taking the breast and pretending like he's enjoying it. तो कृष्ण जो है ऐसा दिखा रहे थे कि उनको बहुत आनंद आ रहा है, और उन्होंने विष लगा हुआ स्तन का पान करने लगे। And all of a sudden, he starts sucking so strong. And then she goes, oh, what's happening? And she goes, leave me, child, leave me. Because Krishna was sucking out her life. थोड़े समय के बाद जो पूतना है बहुत जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ो छोड़ो मुझे, क्योंकि भगवान जो थे दूध के साथ उनका प्राण भी खींच रहे थे। And she's throwing, her hair becomes scattered, and then her demon body starts to show, and she throws herself on the ground because she's in so much pain. वो इतनी पीड़ा में थी कि उसके सारे जो बाल थे बिखर गए, उसका जो वास्तविक राक्षसी का रूप था वो दिखने लगा, वो इधर उधर भागने लगी। She actually was so huge. She was on the ground for many, 10 minutes even. वो बहुत ही बड़ी थी, वो उसकी थी एक जमीन के बड़े भूखंड को घेर सकती थी। And then she died. उसका तो मर गई। Krishna sucked out her life there. कृष्णा ने उनके प्राण खींच लिए। She deserved it, didn't she? वो बिल्कुल उसको ऐसा, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, है कि नहीं? Yeah, she deserved it. Yeah. And then all the gopis and the mothers and the fathers, they're coming, they're going, oh my God, where is our little Krishna? उसके बाद जो गोपियां थी, गोप थे, वो सब लोग, हे भगवान, हमारा बच्चा कृष्णा किधर है? This lovely lady, now look, she's a big ugly demon lying on the ground. हे भगवान, जो इतनी सुंदर स्त्री दिख रही थी अब कितना भयानक राक्षसी दिख रही है और जमीन पे गिरी है। And they were looking for Krishna. Even the cowherd boys, they get up there and looking, and they found him. Just sitting there at the top, laughing. You know that. तो गोपिका जो थे सब लोग भगवान को जब राक्षसी के इधर उधर ढूंढ रहे थे, पूतना के आगे पीछे ढूंढ रहे थे, फिर देखा कि कृष्ण जो है पूतना के ऊपर बैठ के हंस रहे हैं। Yeah. And then after that, they began to think, oh, maybe we should be more careful and watch for Krishna, because this is not the first time someone has come. तो उसके बाद जो सब प्रेम करते थे गोपिका, उनसे आपस में चर्चा करने लगे कि हमें ध्यान देना चाहिए, ये पहली बार नहीं है कि जब कृष्ण के ऊपर ऐसे अटैक होते हैं, हमें ध्यान रखना चाहिए कृष्ण का। How many of you are reading Krishna stories? आप में से कितने लोग हैं जो कृष्ण भगवान की पुस्तक कृष्ण स्टोरी पढ़ते हैं? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sorry, boys, the ladies outdoing you. क्षमा चाहते हैं, लेकिन जो स्त्रियां हैं आप लड़कों से ज्यादा अच्छा कर रही हैं। We went the other day to the teachers, we went to the teacher's house, Krishna's teacher, Sandapani Muni. We went to his ashram, and all around one part of the ashram is all a wall with all the activities that Krishna is doing when he's going to school. Very nice. Gee, if you had a school like that and you could learn so many activities, the children would never be naughty because there would be so much for them to do. Yeah. तो माताजी बता रहे हैं कि दूसरे दिन वो उज्जैन गई थी, तो वहां पर जो वशिष्ठ जो आश्रम है, संदीपनी मुनि का जो आश्रम है, तो वहां पर बहुत सुंदर, आप लोग गए हो तो देखे होंगे, आपने पिक्चर लगा हुआ है जहाँ पर अलग अलग कलाएं सिखाए जाते हैं। जब कोई किसी को इतने सारे कलाएं सिखाएगा तो बच्चे बदमाशी नहीं करेंगे। So we went back and we thought, we're going to get Prabhupada's Krishna book out and check to make sure that was correct. तो माता जी बोले कि हम जब वो सब देखे तो उसके बाद में कृष्णा बुक में खोले और चेक करें, उसको जांच रहे थे कि क्या सच में ये सारी जो चीजें वहां पर हैं वो कृष्ण पुस्तक में है। Yeah. You can look it up. It's Sandapani. Krishna revives the son of his teacher, and there it is all in there.
right? आप देख सकते हैं कृष्ण पुस्तक में है भगवान कृष्ण जो है संदीप मुनि के जो बेटे थे उनको जीवित कर दिया था। ये सब चीजें हैं कृष्ण पुस्तक में हैं। We thought some of the things written on the wall, most of them were correct, but there was a few odd ones. So we wanted to check. ज्यादातर चीजें जो दीवार पे अंकित थी वो कृष्ण पुस्तक से ली गई थी, पर कुछ थोड़ी संदेहात्मक थी, तो हम उसे चेक कर रहे थे, जांच रहे थे। And so we took out the Krishna book. तो इसलिए हमने कृष्ण पुस्तक को निकाला। And then we went to the temple from Mitravinda and Krishna. There's a temple in Ujjain of Mitravinda and Krishna. तो उसके बाद हम लोग एक मंदिर गए जो कृष्ण और मित्रविंद के है। So because if you're not reading all the time, sometimes you forget pastimes. You know it. You know that Krishna married Mitravinda. But just to make sure that we knew the story right, we went back and we also read that story. Yeah. बहुत बार हम ज्यादा हम कृष्ण पुस्तक नहीं पढ़ते, तो हम कभी कभी भूल जाते हैं। इसको हम सत्यापित करने के लिए एक्चुअली एक मंदिर है वास्तव में जहाँ पर माता जी गई थी मित्रविंद और कृष्ण की, और उसे वापस आकर उन्होंने कृष्ण पुस्तक में ढूंढा वो कहाँ है और फिर से पढ़ा उसको। So we actually got so inspired that in Ujjain they only make the classes only when Prabhupada's disciples are visiting or Prabhupada on a cottage. They have a tape. They put Prabhupada giving the class on a cottage. But every other day it's in Hindi. So I would go home and read. And then after going to Sandapani Muni's ashram and to Rukmini and Krishna's temple, we decided we should read every morning from the Krishna book. सोलह पार्ट मुझे तो नहीं समझा, बट सेकंड पार्ट में था कि जब वो सांदीपनी मुनि के आश्रम में गई थी उसके बाद माता जी को इंस्पिरेशन मिला, ऐसा उत्साह है कि डेली कृष्णा पुस्तक पढ़ना चाहिए। Yeah. And we found that really nice and that inspired us. You see? So this Krishna book is so full of nectar and all these lovely personalities that Kunti's telling us about here. You can read those stories together, especially Prabhupada said it's nice to read Krishna story before you go to sleep or to hear a tape if you're not so good. Sometimes I lose my voice a bit by the end of the day. So, and you can hear a tape. Yeah. तो हमें भगवान कृष्ण की जो कृष्णा पुस्तक है जरूर पढ़नी चाहिए, बहुत उत्साह देने वाली पुस्तक है, और अच्छा रहता है कि हम जब साथ में आकर सब लोग पढ़ें, प्रभुपाद जी का आकर सोने के पहले पढ़ें, तो इसको पढ़ सकते हैं। अगर कभी कभी आप नहीं पढ़ सकते हो तो आप ऑडियो भी अवेलेबल रहता है, ऑडियो भी सुन सकते हैं ध्वनि के रूप में। And see, when Krishna was here, he just didn't come and say, well, I'm God, and everyone should just look at me and listen to me. No, he put on a whole, whole life. He showed how you can be a little child, and then later on, as Kunti explains here, then he was a householder, a teacher, and a renouncer. And who was the renouncer? Yeah. Who was Krishna as the renouncer? भगवान जो एक वैरागी के रूप में कृष्ण कौन थे? Yes, he came in the form of Krishna and Radha together. Yeah, I heard it. That's why I was entering. Yes. Yeah, so you see, Krishna gives us the perfect example in so many ways. But he's saying, Kuti's saying here, that so many people just don't want to accept Krishna as the Supreme Personality of Godhead. No? Even the people that came here, I noticed last night, I thought they would be so enthusiastic to get a Bhagavad Gita. But only four. Only four. But it doesn't matter. Even if we can make one devotee. Yeah. If one person. So that's why it's so important for devotees. I always dress in a sari, especially, only at home sometimes I wear this
other clothes because I've got my grandchildren. And where you wear a sari, after some minutes, the sari's falling off, or you're cleaning the house, right? Then you can wear those clothes. But you can go out and dress in a sari, or even dirty, like one devotee in Australia. He's been distributing books for many years. And I said to him when I went to Sydney one time, I said, you know, Rupa, you can distribute books in your dhotis, because he was going always plain clothes, right? And he said, okay. I said, I never wear ordinary clothes to distribute. I've always got a sari, and the people like it. They come and say nice things to me. Oh, that looks really beautiful what you're wearing, right? Did I tell you the story about the man? I'll tell you. Yeah. Sorry. कहाँ से कहूँ? You remember? So yeah, I'll tell at least last part. All right, okay. So माता जी बता रहे हैं कि हम सब स्त्रियों को हमेशा ज्यादातर साड़ी पहनना चाहिए. ये बहुत इंस्पायरिंग होता है दूसरों के लिए. कल शाम को कुछ लोग माता जी क्लास के बाद गीता वितरण करने का प्रयास कर रही थी, तो बहुत कम लोग, यहाँ पर भी जो लोग, बहुत से लोग हैं जो भगवान को भगवान के रूप में, सर्वोपरि भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं. तो हमें जो वैष्णव का जो अटायर है, स्त्रियों को वैसा पहनना चाहिए, और प्रभु को भी धोती कुर्ता पहनना चाहिए. तो एक दृष्टांत बता रही है अपने जीवन से कि एक प्रभु जी थे, रूपा प्रभु, वो उनको रूपा रूप रघुनाथ प्रभु, तो वो हमेशा साधारण पैंट शर्ट वगैरह में जाते थे बुक वितरण के लिए. तो माता जी ने एक बार उनको कहा कि हम अगर धोती कुर्ता में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जब लोग उनको देखते हैं धोती कुर्ता में प्रभु को और माता को इस साड़ी में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है, और बहुत उनको उत्साह मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है, प्रेरणा मिलता है कि हाँ हमें भी गीता लेना चाहिए. तो इस प्रकार से हम जा सकते हैं. And I said, give it a try. So the next day he went out, he wore the dhoti and the kurta. He said, you're right, Surabhi. I did just the same as if I wore the plain clothes. तो रूप रघुनाथ प्रभु ने अगले दिन धोती कुर्ता पहन करके बुक वितरण के लिए गए, और आने के बाद माता जी के आप बहुत सही थे, मैं बिल्कुल अच्छी प्रकार से बुक वितरण कर पाया जैसे कि हमेशा करता हूँ. So now every time he goes on books, he wears a dhoti. तो जब कभी भी वो जब बुक वितरण के लिए जाते हैं तो वो धोती कुर्ता पहन के जाते हैं. Did I tell the story of the man coming up to me at the bus station when I was wearing a sari? No, you didn't. Okay. I was at the bus station and I was waiting for the bus, and this man came up to me and he said, that looks absolutely beautiful. माता जी एक बार बस स्टेशन पे थी, तो एक व्यक्ति जो थे इनके पास चल करके आते, और माता जी को साड़ी पहनी हुई थी, तो उनको देख करके बोलते, ये बहुत अच्छे दिख रहे हैं आप. He said, can I ask you why you wear this? वो पूछे कि क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने ऐसा क्यों पहना है? I said, I'm a Hare Krishna. माता जी ने कहा, मैं हरे कृष्णा पाली हूँ. And this is what we wear. यही हम वस्त्र पहनते हैं. And he said, oh, Govindas. Govindas. So just by seeing me and hearing I'm Hare Krishna, immediately he thought of Govindas. तो देखिए, जैसे ही उन्होंने मुझे इस साड़ी पहने हुए देखा, तुरंत उन्होंने भगवान को स्मरण किया, गोविंद को स्मरण किया. कितना अद्भुत है. And he said, if you don't mind, can I ask you what this means? अगर आप इसका दूसरा अर्थ नहीं लेंगे तो क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपने जो सिर के ऊपर ये धारण किया वो क्या है? And I said, this means that this body is a temple of God. इसका मतलब, माता जी ने कहा, इसका मतलब ये है कि जो हमारा शरीर है ये भगवान का घर है. He said, that's understandable. ये बिल्कुल समझने योग्य बातें हैं. So that came about just from wearing a sari. तो ये तभी हो पाया जब हम साड़ी पहने हुए थे. And Prabhupada told us that if we wear devotional clothes, it reminds the people of Krishna. अगर हम वैष्णव के जो वस्त्र पहनेंगे तो जो बाहर के लोग हैं उनको कृष्ण का स्मरण दिलाता है. And also, when we go out on the kirtan, someone will see us
he said, the people see us on the kirtan. He said, if a person comes, even he's not involved in the kirtan, but he just sees us, hear us, and he is hearing the Hare Krishna mantra, and he walks down the road, and a car hits him, and he's killed. But he said he's already started his with the connection with Krishna. So in the next life, he'll have a better birth. तो हमें जब नगर संकीर्तन के लिए हम जाते हैं, हम कीर्तन करते हैं, हमें जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम कभी कभी कुछ लोग तो अगर नहीं भी एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं, उसमें शामिल नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी अगर वो कृष्ण के बारे में किसी प्रकार से सुन रहे हैं और ऐसा कभी अचानक से कोई गाड़ी उनको हिट कर दे, उनको धक्का मार दे और वो मर भी जाए, तो भी इसमें उनका एक अच्छा लाभ होगा कि अगले जन्म में उनको भक्ति करने के लिए कुछ विशेष स्थान और ऊंचा लाभ, ऊंचा जन्म प्राप्त होगा। So I'm going to leave it there, and I want to talk about chanting. तो मैं अभी इसको यहीं पे छोड़ती हूँ और मैं जप के बारे में बात करना चाहती हूँ। Because this is the most important thing in our spiritual life. क्योंकि हमारे आध्यात्मिक जीवन के लिए भगवान का नाम का जप करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। But the boy is gone. आप सोइए मत। He is the temple commander that was leading the kirtan before today. रणवीर कृष्ण को कहाँ पे? लाडली लाल प्रभु। Yes, लाडली लाल। He's the temple manager, no? He is a personal assistant to Maharaj. And yeah. He was everything in temple. Yeah. So I want you to all say the Maha Mantra like you chant japa. Can you repeat again? They can say to me, Okay. or say how they say the Maha Mantra when they're chanting japa. आप सब लोग बताइए कि जब आप महामंत्र कैसे बोलते हैं जब जप करते हैं। Okay? बोलिए। हरे कृष्णा हरे हरे So how come when I've told the boys yesterday, this is for the people who weren't there, and there weren't that many there. ये उन लोगों के लिए जो कल नहीं थे, क्योंकि मैंने कुछ लोगों को पहले बताया है। So how come when you sing kirtan, you sing something else? ऐसा कैसे है कि जब आप कीर्तन करते हैं तो कुछ और ही गा रहे हैं आप? You say Hare Krishna. आप कहते हैं हरे कृष्णो। You say Krishna. कृष्णा, ऐसे नहीं बोलना चाहिए, कृष्णा। Yeah, Krishna. Yes. And you say Ramo. रामो बोलते हैं आप लोग? No, it's Rama. ये राम है। Very simple. बहुत आसान है। You don't read in any of Prabhupada's books. He writes the mantra Hare Krishna and Hare Ramo. He doesn't say it. आप प्रभुपाद जी किसी किताब में भी ऐसा नहीं पाएंगे कि प्रभुपाद जी ने रामो कृष्णो ऐसा कहा है, ऐसा लिखा है। It's the disease of the West. I mean, not the West. It's a disease of the Kali Yuga. Everyone wants to change everything. कलयुग का ये रोग है कि सब लोग परिवर्तन, हमेशा परिवर्तन चाहते हैं, परिवर्तन करना चाहते हैं। Prabhupada didn't like it. प्रभुपाद जी को पसंद नहीं था। When he heard someone singing this Hare Ramo, प्रभुपाद जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं था, और जब उन्होंने देखा कोई राम को रामो कह रहा है तो प्रभुपाद जी को थोड़ा गुस्सा he said, are you trying to destroy this movement? वो कहा करते क्या आप पूरे आंदोलन को बर्बाद करना चाहते हैं? And I'll give you an example. मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। I was at the Sunday feast in Brisbane. ब्रिस्बेन मंदिर में रविवार साप्ताहिक प्रोग्राम में था। No more Hare Ramo. No more Krishna. No more Garango. No more Nishingo. And especially not Prabhupada. अभी हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि हम कृष्णो, रामो, गौरांगो और मुख्य रूप से प्रभुपादो नहीं बोलना है। And Krishna is sending people to remind us. I was at the Sunday feast and I came down the stairs
and a lady was standing there. She said, "Can I ask you something?" I said, "Of course." She said, "Can you tell me which mantra is right? The one we know or this new one?" I said, "The one you know." तो जब हम इस प्रकार रामो और राम में इतना अंतर करते हैं तो कभी कभी लोगों में भ्रम पैदा करता है। तो यही कारण है कि उस दिन एक स्त्री जो थी उस टेम्पल में, उस मंदिर में नीचे जो माता जी जा रही थी, तो उनको पूछे कि आप बताइए मुझे कि कौन सा जो मंत्र प्रमाणिक है, जो पहले से प्रभुपाद जी ने दिया वो राम, या जो अभी के लोग अभी आजकल रामो कृष्णो कहते हैं, कौन सा प्रमाणिक है? माता जी ने कहा नहीं, जो पहले मंत्र था वो प्रमाणिक है, वो गाना चाहिए। So now you understand what Prabhupada said about destroying this movement. तो आप समझ सकते हैं ना कि प्रभुपाद जी ने क्यों कहा कि अगर हम ऐसा सही उच्चारण नहीं करेंगे तो हमारा आंदोलन कैसे बर्बाद हो जाएगा। So if Mataji doesn't go to the temples and tell the devotees and some of my other brothers and sisters that this is not right, then everything will go in 10 years' time. Even in the last 10 years, it has become like that. तो ये बहुत आवश्यक है कि माता जी अलग अलग किसी मंदिरों में प्रभुपाद डिसाइपल जाते हैं और इस पर बल देते हैं कि हमें किस प्रकार से भगवान का जो नाम है शुद्ध रूप से लेना चाहिए, नहीं तो सब चीजें बहुत जल्दी बर्बाद हो जाएंगी। और लास्ट के 10 सालों में ऐसा हुआ है कि लोगों ने बहुत परिवर्तन लाया है इस प्रकार का, जो कि सराहनीय नहीं है। If we don't tell you, then who knows what you'll be singing in 20 years? अगर हम आपको ये नहीं बताएंगे तो कौन जानता है कि आप 20 साल, आज से 20 सालों बाद आप क्या गा रहे होंगे, Isn't it? है कि नहीं? You agree? आप लोग सहमत हैं इस बात से? Yeah, you cannot not agree. Right? आप लोग असहमत नहीं हो सकते इससे। Yes. So I want you to take this very seriously. मैं चाहती हूँ कि आप इस बात को बहुत गंभीरता पूर्वक लें, Because if you don't take it seriously, the people that are coming, they're going to be singing something else. आप सभी भक्त हैं, अगर आप लोग इस विषय को गंभीरता से नहीं लेंगे तो जो नए गेस्ट आते हैं तो वो इसको कैसे गाएंगे? So that they come before and they heard that. But because you're going to do the right thing and sing it properly, when they come now, they will think, "Oh, okay, that's the mantra." And they might say to you, "Now you are singing it like this. What about this Ramo Nagar?" You go, "No, that is incorrect." तो ये जो लोग जो अतिथि आएंगे, कभी कभी उन्होंने हरे कृष्ण मंत्र सुना है तो जानते हैं कि राम है, लेकिन कभी कभी बीच में अपने अगर किसी ने रामो गाया हो तो आपसे पूछ सकते हैं कि अरे अभी आप लोग रामो नहीं गाते हो? Who are we singing for? हम किसके लिए ये मंत्र गाते हैं? Are we singing for Krishna, क्या हम कृष्ण के लिए गाते हैं, Rama, राम के लिए गाते हैं, Prabhupada, प्रभुपाद जी के लिए गाते हैं, Nrsimha, नरसिंह देव जी के लिए गाते हैं, Gauranga? गौरांग महाप्रभु के लिए गाते हैं? Are we singing for them? क्या हम उनके लिए गाते हैं? Yes, no. हाँ कि नहीं? Yeah. So when you sing these other things, who are you singing for? अगर हम जैसा चैंट करना है वैसा नहीं करके कुछ और बोल रहे हैं तो हम इन पर्सनालिटियों के लिए हम कर रहे हैं? किसके लिए कर रहे हैं हम? Who are you singing for? आप किसके लिए गा रहे हैं? आप बोलिए किसके लिए गा रहे हैं? अगर आप जब नाम का सही उच्चारण Who do नहीं you करेंगे, think you're singing for? आपको क्या लगता है आप किसके लिए गा रहे हैं? खुद के लिए। You're singing for yourself. Yes. Huh? आप लोग खुद के लिए गा रहे हैं फिर? Because you enjoy it. You think, "I like this. आप I like this." Right? आप रामो कृष्णो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं करना है। But we're not singing for ourselves. We're singing for Krishna. And we're singing for Krishna because Prabhupada taught us. So you understand what he meant. तो आपको ये समझना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आप जब गाते हैं तो आप भगवान की प्रसन्नता के लिए गाते हैं, ना कि खुद की प्रसन्नता के लिए। तो ध्यानपूर्वक गाना चाहिए। So you make your temple that you are singing the mantra properly. आप अपने मंदिर में इस प्रकार से गाइए, मतलब अच्छे प्रकार से गाइए, जो वास्तविक जो मंत्र है उसे गाइए। If someone else comes here and he wants to sing that or start singing that, he said, "Prabhu,
We don't sing that here. अगर कोई व्यक्ति दूसरे जगह से आते हैं और वो रामो कृष्ण ऐसा कोई करके गा रहे हैं, तो हम उनको कह सकते हैं सम्मान पूर्वक कि हम रामो कृष्ण नहीं गाते हैं, हम राम कृष्ण बोलते हैं। Might take some time, but this day we are going to sing the mantra properly, because Prabhupada will become very pleased with you all. प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए हम सब लोग को ये बहुत गंभीरता से लेना चाहिए कि हम लोग अभी से कभी भी रामो कृष्णो नहीं गाएंगे, हम अच्छी प्रकार से राम और कृष्ण का जो सही उच्चारण है वही करेंगे। You know, Krishna, he sends people like the lady to say, what are you guys doing? भगवान जो है, प्रभुपाद जी जो है, हमेशा हमें ऐसा अपने किसी व्यक्ति को, प्रतिनिधि को भेजते हैं जिससे हमें पता चल सके कि हम सही रास्ते पे हैं कि नहीं। वो लोग स्त्री आकर हमसे पूछते हैं कि आप क्या गा रहे हो? Because on the Harinam in Melbourne, one man came up to us and he said, chant the mantra properly. मेलबर्न में एक व्यक्ति अचानक से जो कीर्तन करके भक्त लोग जा रहे थे, उनके पास आकर के बोले, आप मंत्र को सही प्रकार से जप कीजिए। I understood Krishna has sent this man to wake us up. माता जी ने उसे इस प्रकार से लिया कि भगवान कृष्ण ने हमें सही प्रकार से मंत्र जप करने के लिए एक प्रतिनिधि को हमारे समक्ष भेजा है। Understand? समझदार हैं आप लोग? Accept? आप लोग स्वीकार करते हैं? No, I don't. I'm leaving today. आज मैं जा रही हूँ यहाँ से, So maybe I don't hear another kirtan from you. तो लाल प्रभु अगर यहाँ पे है क्या, तो अभी आप लोगों के माध्यम से मैं दोबारा कीर्तन नहीं सुनूंगी, तो आप लोग ध्यान से जो मंत्र जैसा जप किया जाना चाहिए वैसा कीजिए। The next time I come, what are you going to be singing? अगली बार जब मैं आऊंगी तो आप लोग कैसे गाएंगे? Thank you very much. आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। And the new people that come, you teach them. तो हमारी ये जिम्मेदारी है कि अगर कोई व्यक्ति नया आते हैं तो वो भी अच्छी प्रकार से गाएं। Yeah. Okay. Yes. Any questions? किसी को कोई प्रश्न है? No questions. So that means you've understood very nicely. कोई प्रश्न नहीं है, इसका मतलब आप लोग सभी ने बहुत अच्छी प्रकार से समझा है। I will tell you one Prabhupada story that I had. Actually, I'm not very good at Sanskrit. माताजी प्रभुपाद जी के जीवन से एक जो दृष्टांत है उसको बताएंगी यहाँ पे। And when we were in the beginning of Krishna conscious years, maybe it was 72, I think, and we were in France, just a new temple. We went from Germany to France to see Prabhupada. Prabhupada was there. ये 1972 की बात है जब मैं फ्रांस में थे और जर्मनी से फ्रांस गए थे प्रभुपाद जी को देखने के लिए। In Germany, we didn't pronounce the Sanskrit. We hadn't heard that. Only the devotees, mainly in America, like that. जर्मनी में संस्कृत का उतना अच्छा से उच्चारण नहीं करते थे, अमेरिका में भक्त लोग करते थे। And we were all going into it wasn't the temple, it was just like extension of the temple, just a room. And Prabhupada was giving the class there. So I thought, I'm going to go in early and I'm going to get a place at the front. जो माता जी गई थी तो मंदिर नहीं था, एक उप मंदिर था, लेकिन माता जी ने सोचा मैं पहले चली जाऊंगी और जब प्रभुपाद जी जब क्लास देंगे तो बिल्कुल आगे बैठूंगी ताकि प्रभुपाद जी का अच्छे से दर्शन हो और कथा सुन सके। And in those days, the men and the women would sit together. There was no ladies on one side, men on the other. We were all together. उस समय ऐसा भेदभाव नहीं था कि स्त्री और पुरुष अलग अलग बैठे, ऐसा पार्टीशन नहीं था, सब लोग साथ में बैठ सकते थे उस समय। And they were reading from the Srimad Bhagavatam, and Prabhupada was saying the Sanskrit, and then he said, men. So the men started
saying the Sanskrit. Yeah. तो उसमें भागवत से पढ़ रहे थे, तो उसमें प्रभुपाद जी ने श्लोक पढ़ा और फिर उसके बाद कहा हाँ तो प्रभु जी लोग में बताइए, तो प्रभु जी बोलना चालू किए संस्कृत। I'm thinking, oh, I hope he's not going to say ladies. तो माता जी मन में सोच रहे थे कि मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रभुपाद जी ऐसा ना बोले कि अभी स्त्रियों का नंबर है। And we had the carpet on the floor. And then Prabhupada said ladies. तो तुरंत ही प्रभुपाद जी ने कहा कि हाँ अभी स्त्रियों को कहना है। And I'm right up the front, the first lady. माता जी कह रही कि मैं बिल्कुल ही प्रभुपाद जी के बिल्कुल आगे थी, फ्रंट सबसे पहले। And they gave me the book. तो उन लोगों ने जो वहाँ पे मैनेजर्स थे उन्होंने माता जी को किताब दिया। I just want to crawl under the carpet. माता जी ने मैं कारपेट के Anyway, I started pronouncing not very good, terrible. तो माता जी ने प्रयास किया बट वो उतना सही उच्चारण नहीं था। And Prabhupada started to help me. तो प्रभुपाद जी ने मुझे मदद किया कि मैं अच्छे प्रकार से उसका उच्चारण करूं। And he was saying more than I was. प्रभुपाद जी मेरे से ज्यादा बोल रहे थे संस्कृत का वो जो श्लोक था। And Srila Prabhupada is so kind. When I finished, he said, very good. प्रभुपाद जी इतने दयालु हैं, इतना कृपालु हैं कि वो जब मैंने श्लोक कंप्लीट किया प्रभुपाद बहुत सुंदर। Yeah. That was our Srila Prabhupada. यही हमारे श्री प्रभुपाद जी। So merciful, so kind. Like when I got initiated, right? He could sing. प्रभुपाद जी बहुत करुणामय है, हम देख सकते हैं जैसे कि मैं दीक्षित हुई थी उस समय भी ऐसा महसूस हुआ था मुझे। Little bit of nectar. थोड़ा बहुत प्रभुपाद जी के जीवन से। Yeah. Okay. Is it prasadam time? Okay. One question. Yeah. Who loves prasadam? किन लोगों को प्रसाद पसंद है? सबको। We got one online question. Everybody likes prasadam, and we have got one online question. And online? Actually, this is getting broadcasted also. So one question online has come. Can I? All right. Okay. Hare Krishna Mataji, please accept my most humble obeisances. Mataji, thank you so much for the wonderful class. Mataji, question is that, like however we chant the holy name is the same, and Krishna sees the bhava. So Mataji, can you please clarify more on this? So he's saying, he says Krishna, and sometimes it may go Krishna and Krishna. So, but he's saying ki, moreover, Krishna sees the bhava. So, can you please clarify more on this? I have only one thing to say. Practice makes perfect. Srila Prabhupada told us, practice makes perfect. So continue. And if you're conscious, and he taught us to listen to every word. And if you do that, you cannot make the mistake, right? So, but always practicing. Oh, I skipped up. I didn't quite get the Hari right. Then you listen, you put Prabhupada's tape on, you have the very nice one, and many. And I have a particular one that I like. And Prabhupada is saying it so clearly. And if you're chanting and you're listening, and Prabhupada is also chanting, you can't go wrong. In no short time, you'll become conscious. Oh, the mind is trying to pull you away. But if you can try very hard to listen to the mantra, that's what he told us. Listen to every word. And then it takes practice, sir. So, practice. एक ऑनलाइन प्रश्न था कि हम लोग जब चैंट करते हैं तो हम कृष्णा, आप बता रहे हैं कि हम कभी कृष्णा बोल देते हैं, लेकिन हमने सुना है कि हमें कृष्णा तो भावग्राही जनार्दन है, तो आप थोड़ा इसके ऊपर बताइए कि कैसे करना चाहिए। तो माता जी ने कि देखिए, आप लोग प्रभुपाद जी कहते हैं कि जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, उससे हम अपने आप को साध सकते हैं। तो हमें अच्छी प्रकार से इसका अभ्यास करना चाहिए, जो सही चरण उसे करने का प्रयास करना चाहिए। और प्रभुपाद जी कुछ हरे कृष्णा मंत्र के जप के जो टेप हैं, आप उसे सुनेंगे तो आपको वहां से पता चलेगा कि वास्तविक उच्चारण क्या है, और उसको हम अभ्यास के माध्यम से जो हमारा गलत उच्चारण है उसको हम सही कर सकते हैं। तो ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी के टेप को भी सुन के हम अपने जप को सुधार सकते हैं। And sometimes when someone's leading the kirtan and they're singing the mantra perfectly, the response they're singing something else.
You're singing Hare Krishna, Hare Rama, and the response they're singing Krishna Ramo, right? But how come? Why? The person who's singing is singing it perfectly. Why you want to sing what you like? Because it's sense gratification. तो कभी कभी ऐसा देखा गया है कि जो लीड सिंगर होते हैं, वो जो प्रमुख गायक होते हैं, वो अच्छी प्रकार से गा रहे होते हैं, लेकिन जो दूसरे जो उनको अनुसरण करने वाले होते हैं, वो अनायास ही अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कृष्णो रामो गाते हैं. ये सही नहीं है, हमें ध्यान देना चाहिए. Some people say, oh, it's Bengali. You have Bengalis here? Yeah. But Prabhupada was Bengali. He didn't do it, so you can't use that one. जो कृष्णो एंड रामो करते हैं, तो कभी कभी लगते हैं, ओ ये तो बंगाली एक्सटेंट है, इसे गलत मत कहिए. लेकिन माता जी कह रही है कि अरे प्रभुपाद जी भी बंगाली थे, क्या प्रभुपाद जी ने कभी कृष्णो एंड रामो कहा? तो इसीलिए हमें ऐसा एक्सक्यूज नहीं देना चाहिए. One time, I was at Rasamrita Pond at the back of Mayapur. It's quite a long walk, so I decided to get a rickshaw. And there was a young boy driving the rickshaw, and he was chanting Hare Krishna. Perfect. I said, where are you from? He said, here, Bengali. And I said, you chant the mantra perfectly. He said, yes, this is a mantra. I said, you should go to the temple and take it up. And that was a great example. It's Bengali. No, he was Bengali. माता जी जो अब कुछ समय पहले एक व्यक्ति मिले थे और रामो को जस्टिफाई कर रहे थे, सत्यापित करने का प्रयास कर रहे कि नहीं, रामो कृष्णो सही है. माता जी ने एक दृष्टांत बताया कि एक बार वो मायापुर में थी, तो मायापुर के पास में कोई एक जगह था, वहां से आ रही थी, तो एक रिक्शे पे आ रही थी. तो रिक्शे पे आने का जो युवक थे, वो छोटे बालक थे, और वो कृष्ण का कीर्तन कर रहे थे, हरे कृष्ण का जप कर रहे थे, और बहुत शुद्ध उच्चारण कर रहे थे. तो माता जी बोला कि आप कौन? बोले कि मैं यहीं से हूँ. वो भक्त बोले कि मैं यहीं से हूँ. बोला अरे वाह, आप तो बहुत सुंदर उच्चारण कर रहे हैं. माता जी कह रहे हैं कि उनको लाना चाहिए, और जो मंदिर में लोग कहते हैं ना कि मैं बंगाली हूँ इसलिए इस प्रकार से जप कर रहा हूँ, उनको बताना चाहिए कि सही उच्चारण तो ये है. So I have given you convincing answers. Yes. तो मैंने आपको समझने योग्य और बहुत अच्छी प्रकार से आपको उत्तर दिया है, आप लोग समझ सकते हैं इसको. So you have to tell your congregation, it is the old mantra, not the new one. तो हमें अपने जो भी भक्त लोग आते हैं उन सबको बताना है, भक्त समाज के सभी लोगों को बताना है कि हमें कोई नया मंत्र जप नहीं करना है, हमें जो प्रभुपाद जी ने जो मंत्र दिया है उसी को हमें जप करना है, उसी को कंटिन्यू करना है. The Hare Krishna mantra is perfect. We don't have to change it or add anything. हरे कृष्ण जो महामंत्र है पूर्ण है, हमें उसमें कुछ बदलने की जरूरत नहीं है, उसमें कुछ जोड़ने की जरूरत नहीं है. You agree? आप लोग सहमत होते हैं इस बात से? Yes, very good. Okay. So from now on, when I come here, this temple, even if it's the first in the world, that they have got the original mantra, not this new one. Out with the new. Prabhupada said the disease of the people in the Kali Yuga, they like to change everything. तो मैं चाहूंगी कि ये जो है बहुत सभी प्रकार अच्छे प्रकार से नाम जप करें, और बहुत अच्छा मंदिर, प्रथम मंदिर हो जहाँ पे सही से उच्चारण होता है. और प्रभुपाद जी कहा करते थे कि कलयुग का रोग है कि सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं, मंत्र को भी चेंज करना चाहते हैं, जो कि सही नहीं है. मंत्र को चेंज नहीं करना है. We got one question, Mataji. You want to ask something? Check. Thank you. Taking your this thing point about chanting the mantra properly, Yes. are not based on our own liking. Yeah. You must speak a little louder. Okay. आगे. My ears aren't going so well. Well, Yeah. My question is, in our society, this is the fact of life that everybody wants to say, this is how we want to do. Mm. Is this a reflection of that same thing? For example, if somebody does wrong and I point it out, I'm just taking example. The other person just says, this is my way. Mm. No, That's how wars start. that's how That's how wars start. war starts. Yeah. But this is the common problem that we have in the society today, at least in our Indian society. Yeah.
everybody wants to go their own way. Yeah. And the right way is just being known upon by giving some frivolous reasons. Why is it so? When you are finding this problem in the mantras, this is affecting every part of our Indian society. Well, Everybody wants to say their own way. It's Kali Yuga, and it's only getting worse. And you know, if they continue this Hari Rama, Krishna, and all the rest of it, Krishna's got, like I said yesterday, Yeah. we'll come to the time when it's death, and Krishna, because all of our life is brought forward and looked at, and Krishna was saying, what was that? I know you were singing part of my mantra, but some other things were coming in between. And he said, well, you know, you have to chant the mantra properly if you want to go back to the spiritual world, because in the spiritual world, everyone chants it properly. So I'm sorry, you have to go back down and learn to chant properly. So it'll be the same with everything. If you don't do things properly, you'll be out there in the world, you get yourself in a lot of trouble, right? Yeah. If everyone decides that they're going to make the tea in a different way than everyone knows, they're going to say, oh, well, maybe we should dry out the tea and tea bags and add some sugar, right? They're going to get a lot of trouble, right? The whole world will be becoming crazy. And so, you know, they say my way or the highway. So we're saying, you have it already pure. Prabhupada taught us, don't change anything. He instructed us. That was in the last years of his life, he was saying to us, don't change anything. It's an insult. Prabhupada sat for 12 years of his life, a little bit even before that, when he was in India, he was doing the Bhagavad Gita and the Srimad Bhagavatam. But the last 12 years of his life, he was writing these books. And in these books, you will find millions of Hare Krishna Maha Mantras written in his books. So if you don't believe that this Hare Rama and Krishna and all the rest of it is not right, then just pick up one of Prabhupada's books and you'll see there's millions of Hare Krishna mantras in there. So he's the authority. These books are the authority, and they're coming directly from Krishna. You know, if someone come and said to me, Surabhi, I would get very upset, isn't it? Yeah. Because my name is Surabhi Yes. for the last 52.5 years, right? So, you understand what I mean? Yeah. Thank you. So shall I tell for others? What's that? Shall I translate for others? Finish now? I'm asking what Prabhuji was asking. Shall I translate or shall I let it be? Oh, yeah. Did I say too yeah, much? I can- No, no. सो प्रभु जी का बहुत सुंदर प्रश्न था कि आज के समय में बहुत से लोग जो है ना इस प्रकार से गलत उच्चारण करते हैं, और मैं किसी को कहता हूं कि प्रभु जी ये गलत है, तो होता है कि नहीं ये तो मेरा तरीका है, आप अपने काम से मतलब रखिए। तो ऐसे बहुत से लोग हैं, तो ऐसे प्रभु जी ने प्रश्न किया कि इन लोगों के साथ क्या किया जाए, कैसे इनको डील किया जाए। बात है कि कलयुग है, ऐसे लोग करेंगे, लेकिन हमें सही उच्चारण करने का प्रयास करना चाहिए। एंड लास्ट पार्ट में बहुत अच्छी प्रकार से माता जी ने बताया कि कैसे प्रभुपाद जी किताबों में प्रभुपाद जी ने हजारों जगह पे इस चीज को दिखाया है कि हमें सही उच्चारण क्या है और उसे करना चाहिए। क्योंकि अगर आप रामो कृष्णो करेंगे तो इनके इस गलती से कहीं तो भगवान के धाम के पास जाएंगे भी, बोलेंगे कि मुझे एंट्री चाहिए, तो भगवान बोलेंगे कि हाँ मैंने आप लोगों ने कुछ तो नाम जप किया था, लेकिन आधा ही सही था, उसमें पूरा सही नहीं था, ले जाओ फिर से उसको सही करके, क्योंकि यहाँ जो आध्यात्मिक जगत है सब लोग शुद्ध नाम का जप करते हैं, अच्छी प्रकार से जप करते हैं। आप रामो कृष्णो कह रहे हो, जाओ फिर से प्रैक्टिस करके आओ, तो हमें वहां से लौटा देंगे। तो हमें प्रभुपाद जी की जो किताबों में दी हुई जो हरिनाम है उसे उसी प्रकार से लेना चाहिए, और इस प्रकार से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। Okay. One more question. Oh, have this be the last one? Yeah, last question. Yeah. My question is, as you say, we should pronounce Krishna properly, but as we know, people make fun
old, if they still take Lord's name in any way, they get its benefit. So how to understand this? How to make our chanting more effective? Two questions. Don't listen to them. Don't listen to those other ones. You know, if You want to say that in sixth canto, sometimes it says ki, sometimes some people out of joke also, in sixth canto and sloka sometimes that ki out of upahas they sing. But even that is beneficial, it is said in Shastras. So how to understand this? They say. no, that's not beneficial. If you're not singing it properly, why would Prabhupada say, are you trying to destroy this movement? If it's beneficial to sing something that's not right. Not beneficial. Yes. I think ऑनलाइन सुन ली होंगे आंसर. तो ये जो भी है हमें क्लूज नहीं देना चाहिए. अगर गलत तरीके से नाम जप कर रहे हो कभी भी लाभदायक नहीं हो सकता. अगर लाभदायक होता तो प्रभुपाद जैसा क्यों कहते हैं कि अगर आप गलत तरीके से नाम जप करेंगे तो ये हमारे मूवमेंट को बर्बाद कर देगा. Yeah. Thank you very much. Thank you. Hare Surabhi Mataji ki jai. Hare Krishna. So we'd like to thank Mataji because Mataji was correctly saying ki how it is important to have association of such senior disciple of Srila Prabhupada. Otherwise, we'll go here and there. In long run, we need such devotees association so that we can correct it properly. I mean, we can pronounce properly the name, holy name, and many more things like that. Like how should be clean, bead bag, how the temple should be clean, and many more things. So, I on behalf of this Indore, I thank from core of our hearts for coming here and correcting so wonderful ways. Many times correction many people don't like, but I'm sure everybody likes what you said. You corrected us because we supposed to be doing right things. As simple as keeping our bead bags very clean and many more things. So, on behalf of this Indore devotees, I thank you, Mataji, for taking out your valuable time and giving your time here and enlightening all of us by a wonderful example from Prabhupada's life, your life, and many more. So, once again, we'd like to thank Mataji by loudly chanting one time, Hare Krishna, Mataji. Hare Krishna. Hare Surabhi Mata की जय. आज माताओं के लिए एक विशेष क्लास का आयोजन किया गया है जो कि माता जी लेंगी 11 बजे. New temple. 11 o'clock. 11 o'clock. Where I'm staying. ओके. माता जी बोल रही गेस्ट हाउस में बोल रहे हैं माता जी को. तो यहाँ पर बाजू में ही गेस्ट हाउस है. आप माता जी लोग से मिलकर पूछ सकते हैं. तो माताओं के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है. आप सबों से निवेदन है माताएं कि जरूर उस क्लास में आए. 11 बजे आज दिन के. गेस्ट हाउस जस्ट रोड के दूसरी तरफ है जी. हाँ, आप जो मंदिर के सभी लोग जानते हैं एक दूसरे को बोल सकते हैं. हरे कृष्ण. I informed about the program at 11 o'clock. Okay. Yes. All right. Yes. That's Thank Thank you. you. Thank you. Hare Krishna. If you be good, program sets me the films.